तो अब हम लोग सीखने वाले हैं डिजाइन पैटर्न्स इन रिएक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा स्टार्ट टू एंड हम लोग कोड लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि ये डिजाइन पैटर्न्स एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं रिएक्ट में। ओके, तो पहला डिजाइन पैटर्न हम लोग देखेंगे स्मार्ट कंपोनेंट एंड डंप कंपोनेंट। तो ये कैसे काम करता है, उसमें एक स्मार्ट कंपोनेंट होता है। ओके, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में एक स्मार्ट बंदा होता है या फिर मॉनिटर होता है, वही जाके या तो प्रिंसिपल या तो टीचर से बात करता है। अगर स्कूल के क्लास के किसी भी और बंदे को प्रॉब्लम हो तो वो उस स्मार्ट बंदे के साथ कम्युनिकेट करता है और वही बंदा जाके अपने टीचर या अपने प्रिंसिपल से बात करता है। सेम पैटर्न हम लोग रिएक्ट में भी यूज करते हैं और ये पैटर्न आपको सीखना ही सीखना होगा, बिकॉज यही पैटर्न मोस्ट ऑफ द रिएक्ट एप्लीकेशंस में यूज होता है। ओके, तो इसमें एक स्मार्ट कंपोनेंट होता है। वो क्या करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट विथ एपीआईज, सर्विसेज, रिडक्स। एंटायर लॉजिकल थिंग हैपन्स इन स्मार्ट कंपोनेंट। और जो डंप कंपोनेंट होते हैं, केस डंप कंपोनेंट 1 और 2, वो जस्ट डेटा लेते हैं या फिर डेटा पास करते हैं टू पेरेंट कंपोनेंट। सो स्मार्ट कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक ईच एंड एवरी डिसीजन। ओके, अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके कुछ अलग अलग नेम्स भी है। ओके, जैसे कि कंटेनर कंपोनेंट और प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट, स्टेटफुल, स्टेटलेस, ये सारे नेम इसी के हैं। ओके, तो आप अगर देखोगे स्मार्ट कंपोनेंट, डंप कंपोनेंट, तो कोई ये भी बोल सकता है कंटेनर कंपोनेंट, प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट, स्टेटफुल कंपोनेंट, स्टेटलेस कंपोनेंट, लॉजिकल कंपोनेंट वर्सेस यूआई कंपोनेंट, कंट्रोलर कंपोनेंट, व्यू कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट, कनेक्टेड कंपोनेंट एंड प्योर कंपोनेंट। सो ये सारे उसके ही अदर नेम्स है। ओके, सो डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड बाय जस्ट नेम्स। ये स्मार्ट कंपोनेंट एंड डंप कंपोनेंट ही है। इसको हम लोग अच्छे से अभी देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करना है रिएक्ट एप्लीकेशन में। पूरा कोड लिखेंगे स्टार्ट टू एंड एंड विल अंडरस्टैंड। ओके, तो ये सेम एप्लीकेशन है जिसके साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो अभी इफ यू कैन सी कि इसमें हम लोगों ने लास्ट तक थीम्स वगैरह इंप्लीमेंट किए थे। ओके, मल्टी थीम्स। ओके, इफ आई स्विच द थीम यू कैन सी हियर थीम्स। यहां तक हम लोगों ने अभी तक इंप्लीमेंटेशन किया था। अब हम लोग डिजाइन पैटर्न्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ अपने फीचर्स के अंदर और एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, स्मार्ट कंपोनेंट, डंप कंपोनेंट। ओके, इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ कॉल्ड प्रोडक्ट्स। हम लोग प्रोडक्ट से ही समझ लेते हैं। ओके, प्रोडक्ट्स के अंदर मैं एक फाइल जनरेट करता हूँ कॉल products.jsx। ओके, हम लोग क्विकली इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, बिफोर दैट विल क्रिएट ऑल द रिक्वायर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके, अब इस प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे डंप कंपोनेंट्स होंगे प्रोडक्ट लिस्ट एंड सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स। तो उसके फोल्डर्स हम लोग क्रिएट करते हैं। लाइक प्रोडक्ट लिस्ट एक रहेगा और उसका एक JSX रहेगा। ओके, सिमिलरली हम लोग एक फोल्डर करेंगे सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स। ओके, इसी को कॉपी करते हैं और इसी के अंदर एक फाइल जनरेट करते हैं सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स.jsx। तो हमारा ये जो है ये पेरेंट कंपोनेंट और स्मार्ट कंपोनेंट है। सो दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट विथ एपीआईज, रिडक्स। ओके, और विल बी एबल टू टेक दी स्मार्ट डिसीजंस। और ये मेरे डंप कंपोनेंट है। अब वो कैसे इंप्लीमेंट करने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा कि ये होता कैसे है। तो प्रोडक्ट्स में मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट का कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स। ओके, so for now we'll just return the products. Okay, just a h1 tag. Okay, nothing else. And this is again will pass here like our app container, and we'll put here like margin 2 or something like that. So we'll see like we'll add these products now to our app.js. Okay, currently it's product list and that is the reason you are able to see all the products. अभी हम लोग इसको स्मार्ट और डंप कंपोनेंट के पर्सपेक्टिव से बिल्ड करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे अभी जो हम लोग ऐड करने वाले हैं वो है प्रोडक्ट्स फीचर, ये वाला। ओके, अब इसको प्रोडक्ट लिस्ट को निकाल देते हैं, इसको सेव करते हैं। अब ये देखो प्रोडक्ट्स लिखना स्टार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों कंपोनेंट का भी कोड लिखते हैं। ओके, कॉन्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, अब प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर मैं पास करूंगा प्रोडक्ट्स को। ओके, फॉर नो कंसिडर दिस देयर आर नो प्रोडक्ट्स, बट हम लोग यही करने वाले हैं। ओके, एक कोड जो लिख रहा है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फॉर नाउ आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग वट एवर गिटअप को पायलट इज सजेस्टिंग और फ्रॉम माई आईडी। ओके, ये सेम प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट है जो हम लोगों ने अर्लियर बिल्ड किया था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग एक प्रोडक्ट्स एज अ प्रॉप्स ले रहे हैं। ओके, टू दिस कंपोनेंट देर इज नो लॉजिकल स्टेप हियर इन दिस कंपोनेंट। ओके, अब ये बटन जो है उसको हम लोग कॉमन कंपोनेंट से इंपोर्ट करते हैं। सॉरी, import button here. Now that error is gone. Okay, similarly we'll create one component called selected products. Okay, अब इसमें फॉर नाउ कुछ नहीं ऐड करते, और क्लास नेम भी हम लोग और सिंपल डिव ऐड करते हैं। ओके, इफ रिक्वायर्ड विल ऐड द क्लास नेम्स लेटर। ओके, अब ये जो भी कंपोनेंट्स क्रिएट किए उसको हम लोग पेरेंट के साथ रजिस्टर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले दिखाते हैं अपना प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, अब प्रोडक्ट्स तो हमारे पास है नहीं। ओके, तो फॉर नाउ लाइक आई पास प्रोडक्ट्स as, or probably what I'll do, I'll take the products so that you can understand. Okay, import use dispatch use selector. Okay, we'll create the component separate, const dispatch use dispatch products state dot products. Okay, so we have products now, and here also will implement use effect. Okay, to call this state like import, or use state is not required, we'll just use effect. Okay, and here we'll dispatch from use effect, dispatch fetch products or get products, like we'll add our actions. So import get products from so if I go to store slash product slash प्रोडक्ट एक्शंस। ओके, सो ये एक्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग डिस्पैच करेंगे ताकि हमारे पास प्रोडक्ट्स स्टेट में आ जाएंगे। ओके, प्रोडक्ट्स div। ओके, और use effect is not defined, this u should be small. Okay, it should be highlighted. Okay, but not sure why ESLint is not handling all that. It seems it's working. Okay, there are no errors as such. So I'll go to, so let me console log this products. Okay, for now inspect it, we'll see in the console what's happening. Okay, let me refresh the page. Slash get products, sorry why I'm making all these mistakes, I'm not sure, but
This is the same line, right? Yeah, probably we might be missing something in the code, but yeah, now I can return uploading API. All the warnings are gone and we are able to see the view. So here we'll put the class name, card image top, and some styling. Okay, let's see how it, yeah, now it looks perfect. So this is fine. We are able to see the products. Similarly, we'll add the selected products. Okay, so selected products. So you can see here at the bottom, we are able to see selected products. Now what I'll do, I'll display this container as a row. What I want actually, I want two buttons. Okay, one is add to cart and another one is select. So whenever I click on select, it will be added to select list and that select list will be displayed on the right side. Okay, तो वो हम लोग implement करने वाले हैं. So I'll go to product list. So currently there is this one button add to cart. Similarly, I'll add one more called select. And for this primary, I'll change this warning. Okay, so that you can, yeah. Now I'll put some margin so that between the buttons. Now you can see here there is a select button and there is a add to cart button. So whenever I select, it will be added to my selected product list. For that also I'll create one action, or probably I'll start from the types. Okay, export const get selected products. I save this file. I'll go to actions. I'll import get selected products. Okay, and here export const get selected products, and I'll pass the product here. Get selected products, payload is a product. So I've created this action. Okay, we'll call this action to get the selected products. So how to get the selected products? So I'll go to reducer. I'll add one more here, selected products, that is array. Okay, and after this what I'll do, const caps, no, sorry, I'll import so that it should understand. Get selected products. Now we have implemented this in reducer. Okay, so what we have done so far, we have created the type called get selected products. Okay, then we have created the action get selected products. We pass the entire product and we return the state. So whenever I get the payload, whatever available products, along with that I add the newly selected product. Okay, so I go to here and now here I'm able to select selected products. Okay, I'll put some condition. Why I have added this now? Because so that I can pass the selected products to this selected products component. Before that, based on this, I'll add some conditions so that our UI should work correctly. So div class name. Okay, and this class name should be based on some condition. Okay, so if selected products, okay, dot length is greater than 0, then I want call md8, otherwise call md12. Okay, so what is this call md8? Okay, I'll tell you in simple. Okay, जो bootstrap का कॉलम ग्रिड है, वो अगर ये पेज आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ओके, तो ये इसको ना 12 कॉलम्स में वो डिवाइड करता है. ओके, अभी हम लोग कुछ भी नहीं पास कर रहे तो वो पूरे 12 कॉलम्स को यूज कर रहे हैं. बट मैं बोल रहा हूँ अगर सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स में कुछ डेटा है तो तू 8 ही कॉलम्स ले
इस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, लाइक प्रोडक्ट लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए 8 ही कॉलम्स ले, बाकी के जो 4 कॉलम्स है वो मैं सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए यूज करूंगा। सिंपल है। ओके, तो अभी ये 12 कॉलम्स यूज कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट में कुछ नहीं है तो 12 कॉलम्स में दिखा। ओके, दैट इज द लॉजिक विच आई हैव एडेड हियर। Okay, I'll control X and I'll add it here. Now for this also, okay, length is greater than 0, then use this call MD4. That means अगर लेंथ 0 से ज्यादा है इसमें तो ये कॉल MD4 इसको, मतलब जो बचे हुए 8 से 4 थे वो इसके लिए यूज कर रहा हूं मैं। ओके, div। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। ओके, भले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक हैंडलर लिखते हैं। ओके, कॉन्स्ट हैंडल सिलेक्ट प्रोडक्ट। ओके, तो ये डिस्पैच क्या करेगा, गेट सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स जो हमने एक्शन लिखा है उसको डिस्पैच करेगा। ओके, ये नहीं है सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, ये एक्शन भी हम लोगों ने लिखा हुआ है और इसको हम लोग पास करेंगे। ये एक्शन हम लोगों ने लिखा है और ये इवेंट। ओके, और ये कॉल बैक लिखा है मेथड जो हम लोग पास करेंगे प्रोडक्ट्स को। ओके, सो हैंडल, अब हम लोगों ने इसको पास किया। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। ओके, सो वेन एवर दे क्लिक ऑन दैट, so it should call this method। okay, but this method is written in parent component, nothing is happening here। okay, so even though you click on this button, okay, on click, okay, what it does basically, it calls this product, so where this will pass the data, it will pass the data to the parent component, nothing is happening in this component। okay, so for now whatever console statement also that I'll remove। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये हम लोगों ने गलत लिखा है, इसको करेक्ट करते हैं। ओके, selected products dot length and will accept the copilot। okay, I'll remove this for now, I'll close the div, accept। so what we are saying, like, this length is greater than 0, then apply the call MD4, that's it। so this is one change। and if I go to product list, okay, this call, like, we are calling one function, so we should call something like this। now we are able to see the UI, we'll click on select, so here you can see now it has taken 8 and 4 columns are left. In these 4 columns, whenever I click on select, will display the selected products and select. I pass the list of products here। okay, so you go to selected products, I'll take the products, for now I'm just displaying li। okay, product.id, product.title, there is no name। okay, so now you can see it's added। okay, so we'll make little bit fancy, okay, by adding bootstrap table। okay, table class name, table stripped, then table head, table row, we'll add one for id, one for title, one for price। okay, or instead of id we'll put hash। okay, also we want to display image, so we'll add one more tr for image, one more we'll add that is for actions। okay, so th scope colon, instead of description we'll change that to actions। so this is our table head। okay, and this is our table body। okay, where we map, so this is our, what it has done, whatever products we have, then index it has taken for our first header, that is hash, then image, if I save this, okay, image like width and height 50 pixel, and we have again added the button to remove, or probably we'll add delete, and this button, okay, we'll import the button first, shared। okay, let's see, all the issues are gone, now you can see here image, title and delete button।
Now the delete button is not working because we have not added any code under it. Okay, but if I add more products, you can see now the products are getting added. Even I cannot duplicate, so I'll stop the duplicate ones first. So I'll go to my reducer, get selected products. Okay, const is product already exists. Okay, I can put some, or probably what I'll do, I'll just implement find index. Okay, so this error states unexpected lexical declaration in case block. So don't disable ESLint errors. Okay, just fix them. Okay, so here in this case it was expecting this one. Okay, now we have done. Let's see. Okay, if I select this one, I can select another. I select another, but if I click the same again, it's not adding, right? The reason behind that, we try to find the same product ID is available under the selected products. If that is available, then don't add, just return the state as is. That is the logic we have added here. Okay, so we remove the duplicate. Now we'll implement the delete. First we'll define the type, export const underscore selected underscore product equal to this one. Okay, I'll add the same to our action, export const remove selected product. We can take the product ID and we can remove the selected product. So this action we have written. Again we'll take this and go to reducer. We have added the type and here simply remove selected product, return state will filter. Okay, based on what? Again the ID and we are returning. Okay, so simple, like we'll pass the product ID, so you can check in the action. Okay, we pass the product ID, so whatever product ID we receive we check. Okay, and we filter basically not equal to this product ID, and now the selected products will have only those records which are need to be there. Okay, so we'll see, like so again I'll go to my product. Okay, and here again I'll create one more method called const handle remove selected product. Now here also we'll remove selected product, handle remove selected product, that will pass here on remove product. I'll go to selected product, will add the handler here as a prop. This method we have written in parent class. Okay, nothing is happening here. These are dump component, they don't take any decision. Okay, they provide the data to the parent component takes the decision. Okay, so here it says on remove, yeah, on remove product it passed the product.id. Let's see if everything works. Okay, if I select this, if I remove this, it's getting removed. So now you can see here the beauty of this smart component and dump component. Okay, so now here I have added all the products and I can delete them one by one. The purpose behind I've done this, like you can see the code is more maintainable. There is not much code in the parent. Okay, and parent takes each and every decision. So by looking at this code we understand parent component is smart component, and if I go to dump component there is nothing. Okay, it just takes the props and use those props. Okay, if there are any handlers then it pass the data to that handler and that handler will get executed in the parent component. Okay, similarly you selected products, there is nothing here, it's just a HTML. Okay, with the props and logical and API calls and every smart decision is taken by my smart component called products. So this is the beauty of smart and dump component.
You should use this in each and every React project. This is very important design pattern, and you should consider while writing the code in enterprise React applications. So we have implemented. If you want some beautification, like we can add, like you can go to selected products, right? It's equal to cart. I'll create one more div called class name. I can put this selected products under the header, and here one more div card body. Okay, just put everything else under the card body. Let's see how it looks. See here, it has added the header. Now I'll header, right? Header pg primary text white. So now you can see, or probably pg success. Now you see the card, right? And I can add as many as. So now you can see here, this is under the card. So we divided the screen into 8 and 4. Now if you want to use this easily, okay, I bootstrap and all, right? So I can suggest you to go for Bootswatch. Okay, let me go to Bootswatch. Okay, you can select any theme, and if you want to create headers, okay, so you can select the code from here. Okay, or if you want to use the buttons, okay, or like typography or any tables or forms, if you want to use navs, okay, these are alerts, progress bars, okay, containers, cards, everything you can simply take the code and you can use in your project. Now let's see, like how it's looking. This button, between data btn sm. See here, now the button becomes smaller and this looks perfectly fine. Okay, so hope I have explained, like smart and dumb component. Product is my smart component, from where you see this takes each and every decision, calls the redux, calls the APIs, takes each and every action, like to call the reducer, or probably you can see, like all the handlers and the logic, everything is written in the parent component. That is my smart component. And to the child component, I just pass the data or the handlers. Okay, and even these handlers are written in the parent component. So they, if they take any action, they pass that data to this handler, and this handler will get executed in the parent components. So this way you can write smart and dumb component. There are other multiple names that we have already seen, but this is a very important design pattern in React, and almost each and every project this pattern is being utilized.